हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू A1 इंग्लिश चैनल। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम काम करते करते चीज़ों को इंग्लिश में डिस्क्राइब कर सकते हैं। इंग्लिश सीखने के लिए मेन चीज़ है प्रैक्टिस, और खुद की स्टोरी टेलिंग से आप बहुत अच्छे से सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नाउ लेट्स प्रैक्टिस। स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में आप इन सभी वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सौभाग्य से आज मैं जल्दी उठ गई हूं। Luckily, I have woken up early today. और मैं आज के दिन को बहुत उपयोगी बनाना चाहती हूं। And I want to make today a very productive day. ये तकरीबन सुबह 7 बजे का समय है। It's almost 7 in the morning. मैं तुरंत कुछ देर के लिए ध्यानमग्न हो गई। I quickly meditated for a really short while. और फिर मैं नहाने चली गई। And then I headed to take a shower. मैं आज ये हरा कुर्ता पहनना चाहती थी, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि यह इस्त्री नहीं किया गया था। I wanted to wear this green kurta today, but I realized that it wasn't ironed. फिर अपने लिए इस कुर्ते को इस्त्री किया। Then I ironed this kurta for myself. स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले अब केवल इंग्लिश रिवाइज करते हैं। वीडियो पॉज करके आप खुद भी सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट। Luckily, I have woken up early today. And I want to make today a very productive day. It's almost 7 in the morning. I quickly meditated for a really short while. And then I headed to take a shower. I wanted to wear this green kurta today, but I realized that it wasn't ironed. Then I ironed this kurta for myself. आज मैं अपना थोड़ा ख्याल रखने जा रही हूँ। Today, I am going to take a little care of myself. मैं वे सभी चीजें करना चाहती हूँ जो मुझे खुशी और संतुष्टि दें और साथ ही उपयोगी भी बने। I want to do all of those things that bring me happiness and joy while also being productive. तो वैसे भी मैं जल्दी से इस कुर्ते में तैयार हो गई हूँ। So anyway, I quickly have got ready in this kurta. मैंने अपने बाल बनाए। I made my hair. और अब मैं अपना सुबह का काम खत्म करने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे अपने कपड़े सूखने के लिए लटका रही हूँ। And now I am trying to finish my morning course, like hanging my clothes to dry. Students, let's revise English sentences. Today, I am going to take a little care of myself. I want to do all of those things that bring me happiness and joy while also being productive. So anyway, I quickly have got ready in this kurta. I made my hair. And now I am trying to finish my morning course, like hanging my clothes to dry. और मैं कुछ नाश्ता भी करना चाहती थी। And I wanted to have some breakfast too. लेकिन दुर्भाग्य से मेरे पास नाश्ते के लिए किराने का सामान या कुछ भी नहीं रखा था।
But unfortunately, I didn't have groceries or anything kept to have my breakfast. तो मैंने बस एक केला खाया. So I just had a banana. मैंने जल्दी से अपने जूते पहने. I quickly put on my shoes. और अपनी त्वचा की देखभाल की. And did my skincare. मैंने जल्दी से अपनी पानी की बोतल भर ली. I quickly filled up my water bottle. क्योंकि मैं भी अपने पानी के सेवन को नियंत्रित रखना चाहती हूँ. Because I also want to keep my water intake in balance. Students, let's revise English sentences. And I wanted to have some breakfast too. But unfortunately, I didn't have groceries or anything kept to have my breakfast. So I just had a banana. I quickly put on my shoes. And did my skincare. I quickly filled up my water bottle, because I also want to keep my water intake in balance. मैंने अपना बैग अपनी किताबों और स्टेशनरी से भर लिया. I made my bag, added my books and stationery. और अब मैं कॉलेज के लिए निकल पड़ी हूँ. And now I have left for college. मैं एक मेडिकल छात्रा हूँ. और मेरी क्लास सुबह 9 बजे शुरू होगी. I am a medical student. And my class will start at 9 a.m. मेरी बीमारी के कारण पिछले 2 या 3 सप्ताह मेरे लिए सचमुच कठिन थे. Because of my sickness, the past 2 or 3 weeks for me were really harsh. मैंने ध्यान केंद्रित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था. I tried very hard to focus, but it just wasn't happening. लेकिन अब मैंने खुद से वादा किया है. But now, I've promised to myself कि मुझे वास्तव में अच्छाइयों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, न कि बुराइयों पर. That I really need to focus on the goods and not on the bads. Students, let's revise English sentences. I made my bag, added my books and stationery. And now I have left for college. I am a medical student. And my class will start at 9 a.m. Because of my sickness, the past 2 or 3 weeks for me were really harsh. I tried very hard to focus, but it just wasn't happening. But now, I've promised to myself that I really need to focus on the goods and not on the bads. यही कारण है कि मैंने अवचेतन मन की शक्ति नामक पुस्तक को पढ़ना शुरू कर दिया है. Which is why I have started reading this book called The Power of Subconscious Mind. मैं इसे पढ़ने के लिए बहुत उत्साहित थी और पहले कुछ पन्नों से ही इसमें मेरी दिलचस्पी बढ़ गई थी. I was so excited to read this, and I was very much intrigued by the first few pages only. वैसे बुरी खबर यह है कि क्लास ही नहीं हुई. By the way, the bad news is that the class didn't happen at all.
हम सभी क्लास के लिए समय पर पहुंचने को लेकर बहुत डरे हुए थे। We all were so terrified to reach on time for the class. हमने आधे घंटे तक इंतजार किया, लेकिन कोई नहीं आया। We waited for half an hour, but nobody showed up. Students, let's revise English sentences. Which is why I have started reading this book called The Power of Subconscious Mind. I was so excited to read this, and I was very much intrigued by the first few pages only. By the way, the bad news is that the class didn't happen at all. We all were so terrified to reach on time for the class. We waited for half an hour, but nobody showed up. इसलिए हम वापस चले गए और मैंने नाश्ते में सादा पराठा, भुजिया और अचार खाया। So we headed to back, and I had plain paratha, bhujia and pickle for my breakfast. यह मेरा मुख्य हॉस्टल नाश्ता है जिसे मैं अक्सर खाती हूँ। This is my staple hostel breakfast that I have very often. वैसे भी अब अगली क्लास के लिए जाने का समय हो गया था, लेकिन मेरे पास 15 से 20 मिनट का समय बचा था। Anyways, it was time to head for next class, but I had 15 to 20 minutes to spare. तो इस बीच मैं कैफेटेरिया में बैठकर दोबारा किताब पढ़ने लगी हूँ। So in the meantime, I am sitting in the cafeteria and started reading the book again. Students, let's revise English sentences. So we headed to back, and I had plain paratha, bhujia and pickle for my breakfast. This is my staple hostel breakfast that I have very often. Anyways, it was time to head for next class, but I had 15 to 20 minutes to spare. So in the meantime, I am sitting in the cafeteria and started reading the book again. आप भी ऐसे ही चलते चलते बहुत आसानी से इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी ही प्रैक्टिस के लिए और वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताएं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। कीप प्रैक्टिस।